Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, we are going to start our next session of An Astronomer's View of the Universe, a beautiful piece of writing that is composed by Sir James Jeans. And the first few paragraphs that we went through in our previous reading session were about the hugeness of this universe, that this universe is so huge that we just cannot imagine how big it is. It is immeasurably vast, and moreover, our earth is just like a grain of sand on some seashore. So that is how small we are in this universe. And he also points out that human beings actually came into being from the beginning of a unicellular organisms, and those organisms in the earlier part of their existence could only reproduce or die, but with the passage of time from them started a stream of life that culminated into human beings who have great ideals, great uh, ambitions and great aesthetic sense, and they are creating beauty in this world. But he also points out that if we look at the nature of this universe, it seems that it is very regrettable to find out that this universe has nothing to do with the existence of any life in it. He says that for the most part, the most areas of this universe are either so hot or so cold that no life is possible in them at all. And he also points out that this from the point of view of time, this universe is so old that the history of human beings is just like the twinkling of an eye in it. That means we do not know since how long this universe had been there in this time and space, and how long it will go on. So that is how we are there in this universe. This is the kind of condition we are in. So he says that into such a universe we have stumbled. Stumble means आ गिरना, कि इस किस्म की एक कायनात के अंदर हम इंसान जो हैं वो आ गिरे हैं, यानी कि आ धमके हैं या बस इत्तेफाक से आ गए हैं. If not exactly by mistake, at least as the result of what may properly be described as an accident. तो ये महज एक इत्तेफाक था कि हम लोग इस कायनात के अंदर पैदा हो गए. The use of such a word need not imply any surprise. Imply का मतलब इशारा करना. So if I'm using the word accident, you should not be surprised by it that our earth exists. For accidents will happen. और कह रहा है कि इस किस्म के एक्सीडेंट्स जो हैं वो फ्यूचर में भी होते रहेंगे. एंड इफ द यूनिवर्स गोज ऑन फॉर लॉन्ग इनफ, एवरी कंसीवेबल एक्सीडेंट इज लाइकली टू हैपन इन टाइम. तो अगर ये कायनात ऐसे ही चलती रही तो और भी एक्सीडेंट्स जो हैं वो इस कायनात के अंदर हो सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी अदर पॉसिबिलिटीज. सो कंसीवेबल का मतलब जिसके बारे में सोचा जा सके. It was, I think, Huxley who said that 6 monkeys set to strum unintelligently on typewriters for millions of years would be bound in time to write all the books in the British Museum. So he said that Aldous Huxley once said that if 6 monkeys are allowed to strum unintelligently on typewriter, unintelligently means बगैर सोचे समझे अगर उनको जो है टाइपराइटर्स के ऊपर जो है टक 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 करने की इजाजत दे दी जाए, तो क्या होगा कि वो मिलियंस ऑफ इयर्स में उतनी ही किताबें लिख डालेंगे या उतने ही पेजेस जो है वो टाइप कर डालेंगे जितने के ब्रिटिश म्यूजियम की किताबों के अंदर मौजूद हैं. And if we examine the last page which a particular monkey had typed and found that it had chanced in its blind strumming to type a Shakespeare sonnet, we should rightly regard the occurrence as a remarkable accident. So all those pages that those monkeys would have typed, if we look all those pages and if we find that at the last page there is a beautiful sonnet of Shakespeare written, तो अब हम उस वाक़े को कि एक बंदर ने जो है शेक्सपियर का जो है नगमा या शेक्सपियर की नज़म जो है उसने लिख डाली, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे? हम उसको सिर्फ और सिर्फ जो है एक एक्सीडेंट ही कहेंगे. सो अकरेंस का मतलब वाक़या. तो वी वुड रिगार्ड सच एन अकरेंस कि हम इस अकरेंस को, इस वाक़े को क्या समझेंगे? अ रिमार्केबल एक्सीडेंट. एक हैरत अंगेज जो है वाक़या ही हम कह सकते हैं. बट इफ वी लुक्ड through all the millions of pages the monkeys had turned off in untold millions of years, we might be sure of finding a Shakespeare sonnet somewhere amongst them. The
प्रोडक्ट ऑफ द ब्लाइंड प्ले ऑफ चांस। सो हो सकता है कि कहीं और भी अगर मजीद जो है उन पेजेस को हम देखें जो कि मॉन्कीज ने टाइप किए हैं, तो हो सकता है कि वी माइट बी श्योर ऑफ फाइंडिंग अ शेक्सपियर सोनेट समवेयर अमंग्स देम। तो हमें एक और भी जो है हो सकता है कि शेक्सपियर का नगमा वहां पर पढ़ने को मिल जाए। तो हम इसको क्या कहेंगे? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्लाइंड प्ले ऑफ चांस। तो ये तो महज एक इत्तफाक के नतीजे में होने वाला वाकया होगा, यानी कि उन बंदरों ने अपनी मर्जी से या सोच समझ कर ये काम नहीं किया होगा, बल्कि ये महज एक इत्तफाक होगा। So this is a very important point to stop and think upon the idea of Sir James Jean's students, that he is of the view that everything in this universe is a result of an accident, and blind uh, play of chance is taking place in this universe. But अगर आप जो है इस दुनिया की नेचर के ऊपर, इस कायनात की नेचर के ऊपर आप गौर करें, तो आपको पता चलता है कि इट हैज सच ग्रेट साइमेट्री, सच ग्रेट पर्पस इन ईच एंड एवरीथिंग, और इस कदर जबरदस्त जो है एक सिस्टम हर चीज के अंदर मिलता है। तो ये क्या एक चांस और एक्सीडेंट की पैदावार है? क्या ये सब कुछ इत्तेफाक से हो गया? नो। हमें लगता है कि ये एक वेल कंसीव्ड आइडियाज हैं हर चीज के पीछे। एक एक तो वो पेजेस जो कि बंदरों ने टाइप किए होंगे, वो तो महज जो है हैफजर्डली और अनइंटेलिजेंटली लिखे हुए पेजेस होंगे, जिनमें अक्सर जगहों पर जो है आपको मीनिंग नहीं नजर आएगी। लेकिन इस कायनात के अंदर तो एक एक चीज के अंदर आपको मीनिंग नजर आती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये महज एक चांस की पैदावार है? इन द सेम वे, millions and millions of stars wandering blindly through space for millions and millions of years are bound to meet with every kind of accident. So all these stars can come with every kind of accident. A limited number are bound to meet with that special kind of accident which calls planetary system into being. तो ये जो एक्सीडेंट हुआ जिसके नतीजे में हमारा प्लानिटरी सिस्टम उसके नज़दीक वजूद में आया, और ये प्लानिटरी सिस्टम यानी कि ये सोलर सिस्टम है जिसमें सूरज के गिर्द कुछ सितारे गर्दिश कर रहे हैं, तो ये सूरज ही के टुकड़े थे उसके नज़दीक, जो कि सूरज के गिर्द जो है फिर बाद में टूट कर घूमने लगे। और वो कहता है कि हो सकता है कि ऐसा ही कोई एक और एक्सीडेंट भी जो है कायनात के अंदर हो जाए। Yet calculations show that the number of these can at most be very small to in comparison with the total number of stars in the sky. कि कैलकुलेशंस ये बताती है कि इस किस्म के सैयारे जैसी कि जमीन है या जैसा हमारा सोलर सिस्टम है, वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन विद द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। जितने भी स्टार्स हैं उनमें इस किस्म के सोलर सिस्टम्स नहीं है जो कि सूरज के गिर्द पाए जाते हैं। Planetary system must planetary system must be exceedingly rare in space. The rarity of planetary system is important because so far as we can see, life of the kind we know on Earth could only originate on planets like the Earth. So he says that uh, the rarity of planetary system is important. कि ऐसा प्लानिटरी सिस्टम वजूद में आना जैसा कि सूरज के इर्द गिर्द मौजूद है और जिसमें एक प्लैनेट के ऊपर जो है ज़मीन भी पाई जाती है, तो उसकी रेयरिटी को जो है सामने रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सो फार वी कैन सी लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ कुड ओनली ओरिजिनेट ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ। इट नीड्स suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is a temperature at which substances can exist in the liquid state. So the kind of earth or the kind of planet that we have, और जिस किस्म की जिंदगी इसके ऊपर पाई जाती है, वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर पाई जा सकती है जहां पर जमीन जैसा माहौल हो, जहां पर उतना टेम्परेचर हो कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर रह सकें। The stars in themselves are disqualified by being far too hot. We may think of them as vast collections of fires scattered through space, providing warmth in a climate which is at most some 4 degrees above absolute zero, about 484 degree of frost on our Fahrenheit scale, and is even lower in the vast stretches of space which lie beyond the Milky Way. Milky Way जो है वो गैलेक्सी है जिसका कि हमारा सूरज जो है वो हिस्सा है। तो इस किस्म की गैलेक्सीज जो हैं मिलियंस की तादाद में, लाखों करोड़ों, जिनको कि हम गिन भी नहीं सकते, पूरी स्पेस के अंदर जो है सर जेम्स जीन्स के मुताबिक मौजूद हैं। Away from the fire there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost,
Close up to them is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil. Again, he is describing the same idea कि जहां जहां तो सितारे हैं तो वहां पर तो इतनी ज्यादा हीट है कि जिंदगी जो है वहां पर जलकर भस्म हो जाए, और सितारों से दूर जो इलाके हैं वहां पर इतनी ज्यादा सर्दी है कि चीजें जो हैं वो बर्फ बन जाएं, जो भी चीज वहां पर जाए। तो दैट इज हाउ लाइफ इज जस्ट सिंपली इम्पॉसिबल। और अगर कहीं जिंदगी का होना पॉसिबल है तो वो हमारे जैसा जमीनी सैयारा ही है जहां पर जिंदगी वजूद में आ सकती है।